कैन इट मैनिपुलेट दिस डॉक्यूमेंट? 2022 से लेकर 2024 तक तो आप सो रहे थे, और जब हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तो आप लोगों ने फर्जीपना काम करना शुरू कर दिया, और एसपी उसको एंडोर्स कर रहा है। और ये पूरी डायरी आई कैन टेल यू विद सर्टेनिटी एक सिटिंग में बनाई गई है। और कैसे, रिपोर्ट आ जाने दीजिए तब बताओ। नॉर्मलिटी, अनयूजुअलनेस कुछ दिख रहा है क्या डॉक्टर? सर इसमें ऊपर का जो पेन है व्हाट इज द वे इट इज साइन सर, वो इसमें चेंज है। पहले ऊपर का पेन, नीचे का सिग्नेचर आर इन द सेम इंक, यस, whereas the remaining part of the body is in the different ink. ठीक है सर। कई बार हमको ये होता है कि हम लोग लिख रहे हैं और लिखते लिखते पेन की इंक खत्म हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, देन वी स्टार्ट यूजिंग द डिफरेंट पेन। तो सर अगर नीचे ऐसी स्थिति थी तो नीचे के सिग्नेचर भी उसी इंक से क्यों नहीं है जिस इंक में पूरी बॉडी लिखी गई है, गिविंग द डिटेल्स ऑफ द सो कॉल्ड सर्च? ये रोजनाम, ऐसा कहा जाता था कि पहले रोजनामचा खाली छोड़ दिए जाते थे तो आराम से भर लेंगे। फिर आप लोगों ने उस आदत को ठीक करने के लिए कंप्यूटराइज किया, या पता नहीं मॉडर्नाइज करने के लिए क्या, मुझे नहीं मालूम किस लिए किया, पर ऐसा लगता है हरकतें नहीं सुधर रही हैं। व्हाट इज योर एक्सपेरिमेंट? हाउ इट कैन बी दैट द अपर पार्ट ऑफ द पंचनामा एंड द सिग्नेचर्स आर इन द सेम इंक, whereas the details of the act done by the authority is in a different ink? Sir, actually, I've spoken to the IO about it, sir, and sir, I would say, sir, prima facie it seems that there are two different colors here, and तो ऐसा कीजिए, हम इसको साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। अगर आप अभी भी कह रहे हैं prima facie, तो yes, before arriving at a conclusion, we must have a scientific report. So should I send it to the scientific FSL? sir, my submission. नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में इस तरीके की बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, मुराना से जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके ऑफिसर्स इस तरीके से बिहेव करेंगे तो टेल देम दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी। हाउ कैन इट मैनिपुलेट दिस डॉक्यूमेंट एंड स्टिल यू आर सेइंग दैट prima facie? Fine, yes, I don't want your conclusion because you I cannot bind you to that since you have admitted, therefore he is guilty. Prima facie, you are correct that yes, there appears to be something which requires further inquiry. I am sending it to the FSL to find it out whether this document is in the same ink or it has been written with different pens. इसकी रिपोर्ट आने के बाद जो क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं सर, आपको तो अभी कल बताया नहीं है, इसलिए आपको भी नहीं मालूम। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका वो आईओ उस दिन कटनी में और कौन कौन से ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करने गया था? Sir, I have actually gone through it, sir. Sir, whatever time I had, sir. No, fine, no difficulties. I just wanted. देखिए सर, एक्चुअली क्या है, आई हैव नॉट कॉल्ड यू टू पॉइंट आउट एनी मिस्टेक committed by you. Sir. I have called you to point out the mistakes which are being done by your subordinates, under hope and belief that the SP will save them. Yes. Right? तो मैं आपके सबऑर्डिनेट्स की हरकतों को डायरेक्टली 1-to-1 बताना चाहता हूं। That's why you were requested to come down. Right? दूसरी बात, जो असली ग्रीवेंस है मेरे को, to whom the direction was given? Sir, direction was given to you. Did you ever go through the case diary before sending it to the High Court? Sir, it was a standing warrant file. Sir, I've been monitoring the case. Sir. Did you ever go through the case diary before sending it to the court? Sir, they took it very easily. Sir, taken for granted answer. हमें तो कुछ करना नहीं है, आईओ ने, सब इंस्पेक्टर ने भेज दो। So if you are dependent on your sub inspector, then be ready to face the consequences of the misdeeds of your sub inspector. I didn't ask the SHO to execute the warrant with a hope and belief that the SP will personally look into the matter. And SP means a person having some responsibility on his shoulders. If the SP are just throwing away the files to their subordinates, okay, जो तुम करोगे हम भी तुम्हारे साथ टंग जाएंगे फांसी पे. Fine, be ready for that. Why you were directed on it?
या हमें शौक चढ़ा हुआ है कि एसपी की शक्ल देखनी है? कभी आपने सोचा कि आपको पर्सनल अपीयरेंस का तो ऑर्डर डे 1 पे किया नहीं था, आप ही को डायरेक्शन दिया था, आपने समय मांगा, हमने समय भी दे दिया था, उसके बाद डायरी आई और सारा फर्जीवाड़ा दिख रहा है उसमें, और आपने डायरी भेजने से पहले यू डिडंट टेक द पेन्स और यू आर गोइंग थ्रू द केस डायरी. So this is the concern which you are showing towards the orders passed by the High Court. You may be busy in pleasing somebody else. You can understand what I want to say. Discharging duties and pleasing somebody, these are two different aspects of placement that words. So you may not be getting sufficient time to look into the diary which has been opened under the orders of the High Court. And once you delegated the authority which was given to you to your subordinate, then be ready to face the consequences of that also. तो मैं अभी सबसे पहले इसका FSL भेज देता हूं to verify that whether it is in the same ink or it is in a different. और उसके रिपरकशंस आपके ऊपर डायरेक्टली आएंगे बिकॉज द डायरेक्शन वाज टू यू एंड इट वाज फॉर यू टू मॉनिटर एवरीथिंग, मॉनिटर एंड सुपरवाइज एवरीथिंग व्हिच यू डिड नॉट डू एनीथिंग. अब आप ये बता दीजिए हाउ इट इज पॉसिबल दैट फ्यू अपर लाइन्स एंड द सिग्नेचर्स which are at the bottom of the document are in the same ink and the body of the document is in the different. Is it possible? We can understand that while writing a document the ink was over and therefore you started using the different. Then the signature should also have been in the same ink in which the body of the order has been, this document has been mentioned. ये पहले खाली छोड़ के उसमें ये लिपापोती की गई है. And you encourage that by not taking care of everything. What have you to say, sir? Sir, first of all, sir, I offer unconditional apologies. I don't want any apology, sir. I am not your employer. I am saying again and again. We have, sir. I am saying again and again that I am not your employer. Your department may promote you, your department may demote you, your department may terminate you. It is none of my business. I am concerned about the fact that one person is absconding who was a hardcore criminal, even according to you. Yes, right? sir. So what is your opinion about the background of that person? Sir, he's a hardened criminal, sir. Hardened criminal. How many offences under section 302 were registered against him? Sir, on record, I think there are around 15 cases, sir. 15 cases. And how many 302 out of those 15? Sir, I don't have the exact details, sir, as of now, sir. But even according to your information, he was a hardcore criminal, right? He's a hardened criminal. And in this case also, he absconded during the pendency of the trial, and the trial is for 302. You people were sitting idle because trial court ने वारंट इशू कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता? वही आपके डीजीपी मुरैना के केस में एफिडेविट्स में एफिडेविट्स दे रहे थे कि माय पुलिस डिपार्टमेंट इज वेरी एफिशिएंट. You must be aware of everything. What transpired at Morena? Are you aware of the affidavits which were given by your DGP? Sir. You are aware. You must be aware that all those affidavits were supported by the circulars issued by the PHQ from time to time. Right? Sir. But you sat over the warrant issued by the trial court. भूप जी को कब वारंट इशू हुआ था ट्रायल कोर्ट का? भूप सिंह जी, योर लॉर्डशिप, ईयर इन द 1992, योर लॉर्डशिप. 92 से वारंट इशू हुए और 2020 में कोरोना लगने के बाद वो ही वाज पुराना छोड़ दिया. माय लॉर्ड, एंटिसिपेटरी हो जाने के बाद ये दोबारा वारंट कब इशू हुआ? दोबारा वारंट 2022 में. 2022 से लेकर 2024 तक तो आप सो रहे थे, और जब हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तो आप लोगों ने फर्जीपना काम करना शुरू कर दिया और एसपी उसको एंडोर्स कर रहा है. दिस इज व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट टू द हाई कोर्ट. और माधव नगर के आगे जौनपुर लिखा जा रहा है. दिस इज व्हाट द इंस्पेक्शन व्हिच यू आर डूइंग. हाउ कैन अ पर्सन कैन राइट